Hey guys, I am Simar. Welcome to the online class of drawing and sketching. So this one is the second class of drawing and sketching. इसके पहले मैंने एक introductory class ली थी in which I have discussed the material and tools and the most important things which are very important for you all. सो मटेरियल्स में पेंसिल्स की बात की थी मैंने, पेंसिल के बारे में डिटेल में बताया था एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स के बारे में बात की थी. So in the second class I am going to tell you about the pencil grades and how to draw lines and I will demonstrate you shading techniques and I hope you will like this class. अगर आपने first class miss की है then you can check out the link in the description, then move to the second class. So guys, let's start today's class. So सबसे पहले मैं बात करूँगी पेंसिल ग्रेड्स की. यू कैन सी हियर 6 पेंसिल्स. इन 6 पेंसिल्स को ग्रेड वाइज एक स्केल तैयार करूँगी मैं, जिसमें मैं डिफरेंट पेंसिल्स के नंबर्स लिख दूँगी. देन आई विल शो यू कि इन पेंसिल्स में क्या डिफरेंस होता है. अगर आप यूज़ करोगे तो कौन सी पेंसिल्स ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, कौन सी पेंसिल्स ज़्यादा डार्क होंगी. सो सबसे पहले HB पेंसिल से स्टार्ट करने जा रही हूँ. HB पेंसिल के साथ मैं फर्स्ट बॉक्स में शेडिंग अप्लाई करूँगी इन दिस वे. यू कैन सी इस पेंसिल से शेडिंग बहुत लाइट हो रही है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पेंसिल्स की डार्कनेस बढ़ती जाएगी. Now I am going to use 2B pencil in the next box. You can see a little bit difference between HB and 2B. Let's move further. So I am going to use 4B pencil now. Now I am going to use 6B pencil. सो इन दिस वे आप एक ग्रेड तैयार कर सकते हैं जिससे आपको पेंसिल की क्वालिटी एंड पेंसिल की डार्कनेस एंड पेंसिल की सॉफ्टनेस के बारे में पता चल जाएगा इजीली. एंड यू कैन सी द डिफरेंस फ्रॉम HB टू 10B. आप देख सकते हैं कौन सी पेंसिल कितनी डार्कनेस दे रही है और कितनी सॉफ्ट है. सो यू कैन सी HB से 10B तक एक जो इंक्रीज ऑफ डार्कनेस है वो आप इजीली इस ग्रेड में देख सकते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ड्रॉ लाइंस.
इसके लिए सबसे पहले आपको लाइंस के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि लाइंस कौन कौन सी होती हैं। यू कैन सी हियर देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स सच एज फ्लैट लाइंस, एक्सेंट लाइंस, कॉन्ट्रोल लाइंस, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग। एंड इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ टेक्निक्स ऑफ शेडिंग एंड स्केचिंग सच एज स्कम्बल, स्क्रिबलिंग, स्मज और ब्लेंडिंग, pointillism or stippling. So further I am going to demonstrate you all these types of lines which are very essential for sketching and pencil shading. So you should have pencils and paper with you. So guys, let's have some practice with me. You can add margins to your sheet and you can also divide your sheet in this way, or you can just use single sheet for just one practice. So मैं ऐसे names लिख दूंगी lines के so that it will be easy for you to understand. सबसे पहले horizontal line, then vertical lines, then I will apply vertical and horizontal lines, and after this there will be diagonal lines. स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस से। इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा के प्रैक्टिस करें एंड दीज आर जस्ट फ्लैट लाइंस और यू कैन कॉल देम स्ट्रेट लाइंस। वर्टिकल लाइंस भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। These lines are helpful in expressing emotional states and evoking emotional responses and providing illusion on the viewer's eye. Generally, the horizontal approach gives your image a wider look, while the vertical direction gives your image a linear or thinner look. So, जब आप पेंटिंग बनाएंगे या स्केचिंग करेंगे तो आप चीज़ों को इस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Then I am going to apply horizontal line and इसी के ऊपर फिर मैं vertical lines लगाऊंगी। आप इन लाइंस को डिफरेंट डायरेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं ऊपर से नीचे को आ रही हूँ, बट यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फ्रॉम द लोअर साइड टू द अपर साइड। नाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस डायगोनल लाइंस। These lines invoke movement, unrest, change, instability and variation. Let's move further to the zigzag lines and wavy lines. Next I am going to use scumble, or you can also call it scribbling. Scribbling or scumble drawing is a drawing merely composed of abstract and random lines. So in this way you can apply scribbles. Then moving further to the circular lines. इसमें आप just ऐसे circles की form में lines लगा के practice कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैचिंग की। हैचिंग में जस्ट ऐसे लाइंस लगा सकते हैं आप। एंड फर्दर जो टेक्निक है वो है क्रॉस हैचिंग। इसमें हम दोनों साइड को लाइंस लगाते हैं इन दिस वे।
I think we have already discussed scribbling. चलो कोई बात नहीं. Again I am going to scribble here. The next technique I am going to apply is Pointillism, and let me tell you, scribbling is also known as scribbling and Pointillism is also known as stippling. So इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंट टेक्निक्स नहीं है, दोनों के दो नाम हैं, ठीक है. एंड स्टिपलिंग में जस्ट हम पॉइंट्स लगाएंगे इन दिस वे. आप डिफरेंट पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें, डार्क टू लाइट. आप जस्ट पॉइंट्स लगा के एक पेंटिंग तैयार कर सकते हैं. Another technique is flowing lines. इसमें आप just wavy lines को different directions में create कर सकते हैं. The next technique is curved hatching. In this technique, you will just hatch, but the lines will be curvy. नीचे से आप देख सकते हैं curve इसमें included है in this way. So these are some types of lines and techniques which are used for pencil shading and sketching. सो आपको इन सभी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू लर्न पेंसिल शेडिंग एंड स्केचिंग. ओके, सो आई होप you learned a lot in today's class. You can ask your queries in the comment box and also share this video with your friends. So stay tuned, stay safe. Thank you so much.